Hello friends, once again welcome back to my channel and let's continue with the same topic Roman numerals. This we have already done basic Roman numeral. Now with the help of these basic Roman numerals we will form a little bigger number. कैसे करेंगे? So I am taking an example. For example, you want to write 13 in Roman numerals. So 13, how will you make 13? Let's let's convert it into expanded form. For 10 I have this and for 3 you have this. So this is how we will write x plus 3. It will be written as 13. This is how you will create 13 using Roman numerals. चलो next number हम लेते हैं 14. 14 कैसे create करेंगे? Are you going to make like this? Yes. So for 10 you have x and for 4 I have this. बन गया 14. Easy है? चलिए let's make 25. 25 मतलब 20 plus 5. Okay. So for 20 I have nothing, but yes, we know 20 can be written as 10 plus 10 plus 5. This is how you can write. For 10 I have x, x and v. This is how you will write 25. Again easy. Okay, let's take a little more bigger. I want to write 38 in Roman numeral. That means 30 plus 8. For 8 I have this. But for 30 I have nothing. So let's split 30 into 3 tens. 10 plus 10 plus 10 plus 8. This way you can write 30. For 10 I have x. One more x for one more 10 and one more x for the last 10. 30. For 8 you have this. So this is how you will write 38. है ना easy? बहुत simple है. Once you understand the concept of writing these numbers into Roman numeral. 38 तो लिख के देख लिया. चलिए एक नंबर और लेते हैं. Let's write 45. कैसे करना है 40? 45. 40 plus 5. 40 के लिए are you going to write 10 plus 10 plus 10 plus 10? No, यहाँ पर wrong है. This is wrong because repetition of basic Roman numeral maximum 3 times, not more than that. You can repeat x maximum 3 times, not 4 times. Okay? C can be repeated maximum 3 times, not 4 times. That would be wrong. So 40 अब कैसे लिखे? 40 कैसे बना सकते हैं? 40 बनाने के लिए अगर 50 में से 10 को माइनस कर दें तो 40 आ जाएगा. You will get 40. Up for 50, you remember we have L. For 50 we have L. माइनस कहाँ करते हैं? लेफ्ट साइड. तो x आगे आ गया. ये जो 50 माइनस 10 किया था हमेशा याद रखें. उसके लिए 50 के लिए हमारे पास L है और जो माइनस किया है वो आगे आता है. याद रखिए ये बात. माइनस जो किया है उसका रोमन न्यूमरल विल कम जस्ट बिफोर द बिगर रोमन न्यूमरल. दिस इज हाउ 40 कम्स. तो ये आपने 40 लिख दिया है. अब 40 प्लस 5 this. It is 45. Got it? Likewise, if you want to write 49. अब 49 कैसे लिखेंगे? ये तो हमें समझ आ गया ना. For 40 we write XL. L X 50 minus 10. 40 के लिए प्लीज इसको लर्न कर लो. जस्ट रिमेंबर इट फॉर एवर. फॉर 40 इट इज एक्सेल. तो एक्सेल तो हमने लिख दिया. ये तो बन गया 40 और 9 कैसे लिखते हैं? ये रहा IX. So XL IX will be written as 49. Take another thing. I want to write 56 in Roman numeral. अब L stands for 50. Remember? चलिए 50 plus 6 ये हम easily कर सकते हैं. We don't need to subtract anything. 50 के लिए we have L and for 6 I have this VI. This is 56. Easy. So LVI will be written as 56. Let's take 78. इसे कैसे लिखेंगे? How to convert it into Roman number?
So for 70 कैसे लिख सकते हैं? 70 plus 8. अब 70 के लिए तो we do not have any Roman numeral. Then what you will do? 70 can be written as 50 plus 10 plus 10. Easy. इन सब के लिए आपके पास Roman numeral है. Plus 8. For 50 we have L. For 10 you have X. One more 10. One more X. 8. This is 8. So this is how we write our 78. Easy. Let's take one more. For example, I want to write 93. अब 93 कैसे लिखें? 90 plus 3. 90 plus 3 कैसे आएगा? 50 plus 40 plus 3. This will be 90. अब 40 के लिए x तो हम we cannot repeat 4 times. अभी just बताया you cannot repeat any Roman numeral more than 3 times. That too specifically few. V नहीं होता repeat. L नहीं होता रिपीट. यू कैन रिपीट x. तो यहाँ भी हम x की बात कर रहे हैं तो x को भी आप 4 टाइम तो रिपीट नहीं कर सकते तो 40 नहीं बनेगा. तो 40 के लिए अभी हमने सीखा था XL. 50 minus 10 which is 40. तो सीधा हम यहाँ क्या करेंगे? For L. For 50 we have L. For 40 we have XL. 40 हो गया. ये 50, ये 40 और 3 के लिए ये रहा हमारा 3. So 50 plus 40, 90 plus 3, 93. So children, this is how we write Roman numerals with the help of addition, splitting numbers, and that too you should have those numbers in your Roman numeral. वैसे ही split करो जो आपको available हो. ठीक है? So this is how we solve Roman numerals. We write Roman numerals against Hindu-Arabic numerals. That's it for today's session. We will meet in our next class. Please like, subscribe my channel for getting more interesting videos. Till the time, bye.